नाश्ता तैयार है सर। और कुछ चाहिए? बोले तो मैं Yeah, just give me some hip hop, hip hop, hip hop, hip. Let's go. हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। Hey, hey, ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। work it, ए girl. हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। Hey, ए hey, हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। scrub it, girl. मेरे प्यार की दरिया में, मेरे लव की दरिया में एक किलो ना से। ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। क्या तू पक रही है? ऐसे तक रही है? खोपड़ी पक रही है? रुक 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 रुक। बख्शीश भी दिया, बोनस भी दिया, चाहिए तुझको क्या? फुट 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 फुट। तेरे घर में बर्तन शर्तन मांजती हूँ मैं बराबर। दूध कभी तो मेरे दिल के घर में पोछा कर दिया कर। God, she thinks she's hot like Reka. Maybe, but she's not my flavor. Loving her is too much labor. Labor, labor. How can I'm a star hip hopper. She's my vibe, just a part-time lover. If I gotta be high to rock her, rock her, rock her. Just give me some hip hop, hip hop, hip hop, hip. Just give me ए some. हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। Hey, ए hey, हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। work it, girl. मेरे प्यार की रिक्शा को, मेरे लव की रिक्शा को लगा दो ना सर। ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर। पूरी बोल रहा हूँ पर वो हिली भी नहीं। आके साथ मेरे डांस करे चिगी विगी। बोली करना चाहती ग्राइंड देती किसी भी नहीं। बम बम लगे करती वो डिगी डिगी। Oh my God, she's so तिकी तिकी। दिल लेगी ऐसी मौत कभी मिलती नहीं। ढूंढा बहुत काफी हॉट लगी डिपी डिपी। जब करी बात की चलेगी मेरे नालों कहती ये भी क्या बात है। हाय नाम में बता दे मेरी जानो कहती ये भी कोई बात है। वैसे हजार बातें करे दिन रातों कहती ये भी क्या बात है। हाय नाम में बता दे मेरी जानो कहती ये भी कोई बात है। मैं जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कहती बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की। वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी। मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूंगी। ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी। अबे जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी। हैवी ड्राइवर आते ही सबकी मौज करा दी। करे बाउंस पूरा दिल्ली करे बॉप करा जी। खुला जी मेरा नाम हूँ मैं बहुत आरामी आओ। लूंगा तुझको संभाल तू गिरेगी नहीं। बुक करूं 5 स्टार तू चलेगी नहीं। बातचीत होगी और कुछ करेंगे नहीं। खर्चे होंगे पर तेरे कभी गिनेंगे नहीं। बताती क्यों नहीं अच्छा दिख रहा तुम्हारा फटा हुआ। क्या चाहिए बेबी। देगी मरने भी नहीं देगी जीने भी नहीं। जानता हूँ प्यार प्यार में तू गिरेगी नहीं। बट जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कहती ये भी क्या बात है। हाय नाम में बता दे मेरी जानो कहती ये भी कोई बात है। वैसे हजार बातें करे दिन रातों कहती ये भी क्या बात है। हाय नाम में बता दे मेरी जानो कहती ये भी कोई बात है। मैं जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कहती आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। इसने तो लॉक ही कर दिया। Shit. क्या हुआ तू छोटी है तो हील्स में दिला दूंगा। तू नल्ली है तो तुझको निहारूंगा। मगर पापा की परी ना कभी पा। Hey, yo, welcome to the live streams। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लाइव आ चुके हैं और हम हैं वीक 5 में जल्दी प्रोग्रेशन कर रहे हैं। मेरे को पूरा पता भाई बहुत बकवास है भाई। जल्दी नहीं करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो आज हम सीखेंगे कि ये जो रेंडर है इस तरह किस तरह बनाते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन इसे कहते हैं, आर्क विज भी कुछ लोग कहते हैं इसे। तो उसके हम बेसिक्स वगैरह सीखेंगे कि यार किस तरह आर्किटेक्चर बनाया जाता है यूजली। और ऑल्दो आप चीज़ें खुद मॉडल कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट नो वन मॉडल्स एनीथिंग बाय हिमसेल्फ। अगर कोई बहुत ही लाइक अजीब सी चीज़ आपने बनानी हो जिसका मॉडल अवेलेबल ना हो, तो फिर उसको आप खुद मॉडलिंग कर सकते हैं। लेकिन यूजली जो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन होती है उसमें मॉडलिंग काफ़ी कम ही लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, ब्लेंडर किट से हम एड एसेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस में पिक्चर्स इंपोर्ट करेंगे हम। पिक्चर्स पे अपने जो इंटरनेट से हम उठाएंगे पिक्चर्स, वो उनके टेक्सचर्स इसमें मतलब लोड करेंगे हम। उसके अलावा प्लस में ट्विक्स वगैरह करेंगे मटेरियल्स के साथ, लाइटिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे वगैरह डिफरेंट चीज़ें ना। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेंडर खोलेंगे, ठीक है। ब्लेंडर खोलने के बाद नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया, और अब हम क्या करेंगे कि सब कुछ पहले डिलीट करते हैं। उसके बाद हम ज़रा एक क्यूब, इनफैक्ट एक क्यूब भी ऐड करना है हमने। तो अब करेंगे क्या, हम इसे ना एग्जैक्टली सेंटर पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाना चाहते हैं। तो हम बेसिकली कर क्या सकते हैं, या तो इसे जी जी करके, या मतलब कोशिश करें कि हम मिडल पे कहीं पे मतलब कोशिश करके वहाँ पे ले आएं, या फिर हम सिंपली कंट्रोल होल्ड करें तो कंट्रोल से ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा ये मिडल में, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसे। अब करेंगे क्या हम, कि हम ना पहले स्केल अपना डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको वहाँ बताता हूँ। एक ह्यूमन साइज़ हम देखते हैं, ह्यूमन हाइट एवरेज, एवरेज, ठीक है। आप देख सकते हैं ह्यूमन की जो मेल की हाइट होती है 1.7 मीटर्स होती है, ठीक है। तो 1.7 मीटर्स का हम एक और ब्लॉक बनाते हैं, इसको ज़रा डुप्लिकेट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट यहाँ पे हम ले आते हैं। अब इसको जो है ना हम थोड़ा ऐसे पतला कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना एग्जैक्टली, वो हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है, डायमेंशंस जी में 2 मीटर्स है, ठीक है। 1.7 मीटर्स का नहीं, 1.7 ही थी ना, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर इसमें से नीचे लाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इतना अगर इंसान की हाइट है तो कमरा उसके हिसाब से कितना होता है, लाइक तकरीबन डबल हाइट का होता है, यहाँ पे डबल से थोड़ा कम। तो हम एवरेज अगर रूम साइज़ देखते हैं, रूम साइज़, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज रूम साइज़ जो है दैट इज़, एक सेकंड हाइट कर लेते हैं। स्केल के साथ काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज़ फिर आप जब मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर सही स्केल पे आते हैं। तो 9 फीट तकरीबन होता है। 9 फीट अगर हम देखें मीटर्स में, 9 फीट इन मीटर्स, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2.7 मीटर्स, हाँ ऑलमोस्ट लाइक डबल होता है उसका, ठीक है। 2.7 मीटर्स का हमारे कमरा होता है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम बेसिकली इसकी जो डायमेंशन है जी में हम कर देते हैं 2.7, ठीक है। ये हमारी कमरे की हाइट होगी, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर ले आते हैं जी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कमरा बन गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे जब स्केल अप करें ना, तो हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में करें हमेशा, लेकिन हमने हर बार फिर ऐसे मतलब लाइक शिफ्ट जी दबाने की ज़रूरत ना पड़े हमें, ठीक है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसका जो स्केल है ना, यहाँ पे आके आइटम के अंदर स्केल में आके जो जी है उस पर हम अगर लॉक लगा देते हैं ना, फिर हम इसे स्केल अप करेंगे ऑटोमेटिकली, ये जी में स्केल अप होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर हम एक्स में भी लगा देते हैं तो फिर हमारी मर्ज़ी है, हम किसी भी लॉक लगा सकते हैं इन सारी उनमें से सारे पैरामीटर्स में से, ठीक है। तो अब हम इस ह्यूमन के रेफरेंस को हटा देते हैं, और प्लस में अब हम देखते हैं डायमेंशंस कितनी होती हैं उसके हिसाब से ना। तो वो तकरीबन हम अभी फ़िलहाल लाइक कोई बड़ी सा साइज़ बना लेते हैं, फिर बाद में मॉडल्स के हिसाब से हम ज़रा इंपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, कि हम इसके अंदर जाते हैं रूम के पहले तो हमारा काम है, सबसे पहले हमारा काम है कि हमने कैमरा सेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अजीब सा हमें वो लग रहा है, काफ़ी अजीब है इसके अंदर मूव करना। तो इसलिए उसकी वजह से हम करेंगे क्या, हम एक कैमरा ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करते हैं कैमरा कैमरा के अंदर जाते हैं, और इसका जो व्यू है कैमरा, लॉक कैमरा टू व्यू। अब इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो आईफोन की या किसी भी फ़ोन की फोकल लेंथ होती है ना, मैं सर्च दोबारा नहीं कर रहा लेकिन मैंने चेक की थी 28 मिलीमीटर्स के करीब होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ोन से निकली हुई हो तस्वीर, तो फिर आप 28 मिलीमीटर्स रखें। अगर आप चाहते हैं DSLR से निकली हुई हो, तो फिर लाइक 30 40 50 60 70 इतना आप जा सकते हैं मिलीमीटर्स में ना। तो मैं इसको 28 मिलीमीटर्स कर लेता हूँ। प्लस में अगर आपने फ़ोन से निकाली है तो ऑब्वियसली जो डायमेंशन है वो भी वर्टिकल होंगी। तो तकरीबन यहाँ पे हम रफली अपना कैमरा जो है पोजीशन कर देते हैं, तकरीबन ऐसे। आई थिंक इट शुड बी फाइन। अपने रेफरेंस में हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह किया हुआ है। जो दीवार है वो वाली नज़र नहीं आ रही, ओके। सो हम ज़रा हल्का सा ऐसे करीब ले आते हैं इस तरह से, आई थिंक दैट शुड बी फाइन, ठीक है। इसमें हम ऑब्वियसली चेंजेस वगैरह बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कैमरा से बाहर निकलते हैं और फिर हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम करेंगे क्या, कि अब हमें पता है कि यार ये जो है जो बॉक्स है वो 100% लाइक ऑलमोस्ट 100% अलाइन हुआ है ज़मीन के साथ।
तो हम अगर बॉक्स को हाइड भी कर देते हैं ना, फिर भी हम आराम से चीज़ें लाइक जो हैं प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक काम करते हैं, हम जो है क्या कहते हैं, एक छोटा सा क्यूब ऐड करते हैं, ठीक है। क्यूब ऐड करते हैं, उसको हम कोनों पे रख देते हैं, बहुत छोटा साइज़ करके ना, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो रूम है वो कितनी साइज़ का है, मतलब बेसिकली उसकी जो है डायमेंशंस कितनी है, ठीक है। जी ऐसे इंक्रीज़ कर दो। समझें यहाँ पे हमारा कमरा जो है एंड हो रहा है, ठीक है। और इसको इस पर हम लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर कमरे के चारों तरफ, ठीक है। मिरर मॉडिफायर कहाँ गया ये ऑब्जेक्ट जो है उसको ये रख देते हैं क्यूब, यहाँ से एक आ गया, ठीक है। और हम इसका अगर वाई भी रख देते हैं तो यहाँ से भी आ गया। अब अगर हम इसे हाइट भी कर दें ना, ताकि हमें ये हाइट हमने इसलिए किया है ताकि हमें लाइक चीज़ें इंपोर्ट करने में और हर चीज़ प्लेस करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने हाइट किया है इसे। तो अदरवाइज़ तो हमें लाइक अगर ये ना हाइट होता ना, तो हमें हर बार अंदर जाके चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मतलब थोड़ा शुरू में हाइट करते हैं, फिर आगे चल के हम इसे अनहाइट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेड इंपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। ब्लेंडर किट में जाते हैं, सिंपली सर्च करते हैं बेड। और यूजुअली आप बाहर से भी मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर किट ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज काफ़ी आसान होता है ब्लेंडर किट से। और लेकिन ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसकी रिक्वायरमेंट्स है कि यार हमें लेट से इस तरह का बेड चाहिए, अब ये ब्लेंडर किट पे तो पैसों का है, ठीक है। तो अगर या तो आप पैसे पे करें, ठीक है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो इतनी ज़्यादा आपको पे नहीं कर रहा कि आप खरीद नहीं सकते वो, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं मॉडल, वो इतना मुश्किल नहीं होता, यूजुअली मिल जाते हैं मॉडल्स। तो लेकिन आसानी के लिए ब्लेंडर किट सही होता है, ठीक है। तो हम आइधर ये वाला बेड इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ये वाला मुझे इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस बार ज़रा मैं भी कोई नई चीज़ ट्राई कर लेता हूँ, ये वाला इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो अभी डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज 70 MB का है, काफ़ी डिटेल्ड बेड होगा। ये अच्छी बात होती है, जितनी ज़्यादा डिटेल्ड आपके एसेट्स होते हैं उतने ज़्यादा ऑब्वियसली जो है आपके कंप्यूटर पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन आपकी चीज़ें रियलिस्टिक भी फिर ज़्यादा लगती है। तो उस हिसाब से आपके कंप्यूटर पे और लाइक चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं रियलिज्म। तो इसको डाउनलोड होने दें, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम और चीज़ें देखते जाते हैं कि हम क्या इंपोर्ट करना है हमने। तो इसके बाद हम करेंगे ये चेयर्स इंपोर्ट करते हैं, साइड टेबल्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम पूरा जो इंटीरियर है इसका बना देंगे। तो ये प्लांट भी हम ब्लेंडर किट से इंपोर्ट करेंगे। तब तक हम ना जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम अपनी तस्वीरें फाइनलाइज कर लेते हैं। तो हम ज़रा जाते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ब्लैक एंड, ठीक है। ज़रा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हमें थोड़ी सी चाहिए जो हम दीवारों पे लगाएं। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली सेम वाली डाउनलोड ना करूँ, मैं दोबारा से थोड़ी डिफरेंट करूँ, बिकॉज ताकि आप लोगों को कि यार आप लोगों ने भी कॉपी नहीं करना, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आपने ट्राई करनी है। समथिंग लाइक ये इस तरह का अच्छा हो सकता है, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी है। चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे बाद में कि कैसा लग रहा है, उस हिसाब से हम फिर लगा लेंगे ऐसा। हम्म, ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको पिक करने का रीज़न एक मेरा ये है कि आपको मैं ज़रा दिखा सकूं कि अगर लेट से आप ऐसी कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं जिसमें पूरी इमेज में वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, ठीक है, मतलब हमें क्रॉप करना पड़ेगा ना, तो ब्लेंडर के अंदर टेक्सचर्स में क्रॉप किस तरह करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो उस तरह सेव कर लेते हैं अभी। तो हमने इसे भी डाउनलोड कर लिया है और अब हम चलते हैं वापस ब्लेंडर की तरफ जहाँ पे ये बेड जो है हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड बेड है जितने मॉडल्स आपके डिटेल ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ज़रा इससे मॉडर्न बेड इसको कलेक्शन जो आ गई हमारे पास इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करते हैं ताकि सब कुछ जो है इसमें इस कलेक्शन में सेलेक्ट हो जाए। बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि अच्छा इसमें तो इस बेड में तो ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके जो इंडिविजुअल पिलोज हो गए वगैरह वो अलग अलग से आते हैं, ठीक है। तो इस लेकिन इस ऑब्जेक्ट में वो नहीं है। तो हम ज़रा इसको रोटेट करते हैं और -90, ठीक है, इधर मूव कर लेते हैं तकरीबन ऐसा। अब हम ज़रा उसको ऑन करते हैं अपने जो है हमारा क्यूब, और हम कैमरा के अंदर जाकर देखते हैं कि बेड लग कैसा रहा है। थोड़ा सा ऐसा मूव करना पड़ेगा, जी शिफ्ट जी, हल्का सा ऐसे मूव करते हैं। आई थिंक इतना ठीक रहेगा, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। और ज़रा टॉप व्यू में जाते हैं और एक काफ़ी लाइक ठीक है, हाँ मतलब ऑलमोस्ट लाइक उसके करीब ही है दीवार के, ठीक है। तो बेड जो है हमारा हो गया फाइनलाइज। अब हम अगर टेक्सचर्ड मोड में जाएँ, लुक डेप्थ मोड में जाएँ, तो आप देख सकते हैं इसके जो टेक्सचर्स हैं वो भी ऑलरेडी अप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है। और ये काफ़ी डिटेल टेक्सचर्स हैं, काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो इवन आप करीब से भी देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ इंपोर्ट करते हैं जो कि है हमारी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ साइड टेबल्स, ठीक है, साइड टेबल्स इंपोर्ट कर लेते हैं।
पोर्ट साइड टेबल, बस आपने सिंपली सर्च ही करना है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। बस इसमें ये कि आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपने हिसाब से कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते। मैं ज़रा एक काम करता हूँ, फ्री फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि हमें सिर्फ फ्री वाली नज़र आए। तो जो रनर मैंने आपको दिखाया था इंस्टाग्राम पे, वो उसमें मैंने ये वाला यूज़ किया था, और आई फील लाइक मैं इसमें भी यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज़ मैंने चेक की थी साइट टेबल्स, लेकिन सबसे अच्छी यही थी। अब एक मसला आप नोटिस करेंगे ब्लेंडर किट का, कि हम अगर कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं ना, अगर मैं वापस इसमें जाऊँ बाय द वे, तो आप देख सकते हैं ये इसकी मॉडर्न बेड की कलेक्शन जो आई थी ना, उसके अंदर ये नई कलेक्शन आई है, ठीक है, जिसमें मतलब ये हमारा पड़ा हुआ है साइट टेबल। तो हम इसे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम इसको ना पकड़ के इसके बाहर लाते हैं, बिकॉज़ ये तो अलग अलग चीज़ है ना, तो हम इस कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं। कलेक्शंस बेसिकली इस तरह काम करती हैं कि ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं ना, लेयर्स के ग्रुप्स होते हैं, तो इसी तरह कलेक्शन भी उसी तरह काम करती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका सीन ये है कि हम हमारी साइट टेबल यहाँ पे आ गई, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और हम ज़रा इसे रोटेट कर लेते हैं जी, और इसको करते हैं 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं, जी शिफ्ट जी, ऐसे हम मूव कर लेते हैं इसे। साइज़ जो इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा ऐसे। और इस ब्लेंडर किट के ऑब्जेक्ट्स की अच्छी बात ये भी होती है कि उनका ओरिजिन जो होता है वो ज़मीन पे होता है, तो मतलब अगर आप इसे स्केल अप एंड डाउन करते हैं तो ये ज़मीन से ही स्केल अप एंड डाउन होते हैं, तो इसलिए आपने उसकी ज़्यादा टेंशन लेने ली होती है कि ज़मीन के साथ टच है या नहीं। यहाँ पे मैं इसे लगा दूँगा, ठीक है। अब इसको यहाँ तो मैं वो कर सकता था डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं इस पर मिरर मॉडिफायर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें मिरर मॉडिफायर लगाता हूँ, ऐड मॉडिफायर और मिरर मॉडिफायर, मिरर ऑब्जेक्ट जो ये हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली इसमें जी एक्स सेलेक्ट हुई थी, तो ये मिरर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे जो है साइड टेबल्स भी बन गए हैं, काफ़ी आप देख सकते हैं आसान प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। थोड़ी जो कॉम्प्लिकेशन जो आएंगी वो हमारी आएंगी लाइटिंग और लाइटिंग वाले पार्ट में स्पेशली, तो ये सीन है। बाकी अब हम चेयर्स इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपली हम सर्च करते हैं चेयर, ओके, और कोई भी आप कर सकते हैं चेयर इंपोर्ट अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, लेकिन रूम में आई फील लाइक एक सेकंड में फ्री फर्स्ट है ना, ठीक है। तो हम ये वाली जो चेयर ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, हाँ, बिकॉज़ ये अच्छी लग रही है। आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली नेवर माइंड, ये 247 MB की चेयर है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर पे लोड डालेगी, और बहुत ज़्यादा डिटेल मॉडल है, इतना इतना ज़्यादा हमें डिटेल नहीं चाहिए, तो ये वाली नहीं करते। हम ये लेदर चेयर कर सकते हैं, हाँ, लेदर चेयर इनफैक्ट कर लेते हैं, लेदर काफ़ी रियलिस्टिक लगता है जनरली। अब मसला ये ब्लेंडर किट का कि अगर आप को लेट से ये डाउनलोड हो रही है चीज़ और आपने कैंसिल करनी है ना, तो आप यहाँ पे अगर जाके देखेंगे, कहाँ गई, यहीं पे तो थी। अच्छा, एनीवेज, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको कैंसिल करने का एज सच कोई ऑप्शन मतलब आसानी से नहीं मिलता। करना आपने ये होता है कि आप सेव करें प्रोजेक्ट को, और फिर बंद करें ब्लेंडर को, और फिर दोबारा से खोलें। तो आप दोबारा से खोलेंगे ना, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं अब हमारे पास लाइक जहाँ पे हम थे वहीं पे हैं, लेकिन हमारे पास वो जो इंपोर्ट किया था हमने चेयर, वो नहीं है हमारे पास। तो ये इसका तरीका होता है जो मतलब मैं यूज़ करता हूँ, क्या पता और भी तरीके हों, लेकिन मुझे ये इसका पता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हैं चेक, अगर मैं फ्री फर्स्ट करूँ, एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मॉडल लेट से डाउनलोड करना है, राइट क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे इसकी साइज़ भी देख सकता हूँ, ओरिजिनल साइज़ 43 MB, ठीक है। तो आप साइज़ देख के चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नहीं है तो आप ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ें जो है उनको डाउनलोड ना करें। तो अच्छा, लेदर चेयर करनी थी हमने, 33 MB इसका साइज़ है, जो विच इज़ परफेक्ट। तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये डाउनलोड होगी। तो अब आप देख सकते हैं जो मॉडर्न साइट टेबल हमने इंपोर्ट की थी, इसके अंदर फिर एक और कलेक्शन है जिसके अंदर ये लेदर शेयर है। तो ये बेसिकली हर बार मसला होता है, अदरवाइज़ इसको मसले का हल करने का या इसको अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि हर बार जब आप इंपोर्ट करें ना, आप अपनी जो मेन कलेक्शन है ना उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और फिर इंपोर्ट करें, ताकि डायरेक्टली उस कलेक्शन के अंदर इंपोर्ट हो। जो आपकी लास्ट सेलेक्टेड कलेक्शन होती है ना, उसके अंदर इंपोर्ट करता है ब्लेंडर किट, ठीक है। तो ज़रा मैं यहाँ पे से मूव करता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा हल्का सा, आर और जी हल्का सा ऐसे मूव करूँगा, रोटेट करूँगा ऐसे,
ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस है ये। अगर हम टेक्सचर मोड में जाएँ, इसके टेक्सचर चेक करें, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और डिटेल टेक्सचर्स हैं इसके। उप्स, थोड़ा सा ब्लेंडर जब टेक्सचर्स इंपोर्ट कर रहा होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, और होपफुली क्रैश ना करे। अच्छा, क्रैश से अवॉइड करने का तरीका एक ही होता है कि आप फाइल में जाएं और सेव कॉपी करें। ये आप करते रहें फ्रीक्वेंटली, ताकि फिर मैंने तो एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है बैकअप्स के नाम से, जिसमें मैं सेव करता रहता हूँ सारे। तो इसको मैं ज़रा कॉपीज़ की सेव कर देता हूँ। एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी मैं कॉपी सेव करता हूँ, ताकि अगर खुदा न खास्ता क्रैश होता है, और सेव करते वक्त क्रैश अगर हुआ ना, तो फिर तो आपका जो सेव फाइल होती है ना, वो भी डिलीट हो जाती है फिर। अदरवाइज़ तो आप डायरेक्टली बस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें फिर हो जाएगा ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप सेव कर रहे होते हैं उसी वक्त क्रैश होता है, तो आपकी फिर जो सेव फाइल है वो भी क्रैश जाती है। तो आई थिंक यहाँ से इतना आई थिंक काफ़ी होगा, सही लग रहा है। हल्का सा ऐसे मूव करते हैं ऐसे। इन चीज़ों को ऑब्वियसली हम चेंज बाद में कर सकते हैं, हमारे पास फुल चॉइस होगी। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे, एक प्लांट इंपोर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो अभी हम एक प्लांट इंपोर्ट करेंगे। आई थिंक ये वाला प्लांट सही रहेगा, इसको हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये होम प्लांट आप देख सकते हैं यहीं पे आया है, बिकॉज हमने पहले कलेक्शन को सिलेक्ट किया था। तो ये सीन है। तो इसको ज़रा हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और फिर अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये सीन है कि इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ना। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअली एक को सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो फिर ये अलग अलग मूव होंगे। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आप कर लें। ठीक है, तो इसको ज़रा हम जी और शिफ्ट जी यहाँ की मूव करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं थोड़ा सा। और ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि कि पूरा फ्रेम के अंदर ना आए, जिस तरह इसमें हो है ना, हो रहा है कि आधा आ रहा है नज़र, आधा नहीं आ रहा। तो इस तरह का हमने सीन करना है, तकरीबन ऐसे हो आई थिंक। इसको ऑब्वियसली बाद में हम ट्वीक वगैरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये वो तो नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा दीवार के साथ, जो कि ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्लांट का सीन यहाँ पे हो गया। उसके अलावा हम क्या करते हैं इंपोर्ट, उसके अलावा हम करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है, हम ये वाले इंपोर्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। बस हम सिंपली बेडरूम लिखेंगे ना। अच्छा, एक और ट्रिक है आपके लिए कि आप सिंपली जो कमरे का लेट से बेडरूम बना रहे हैं, आप बेडरूम लिखेंगे तो आपके बेडरूम के रिलेटेड ना हर चीज़ आ जाएगी। तो अभी मैंने, अगर आपने टीवी ऐड करना है, टीवी तो खैर ये जो दीवार है इसकी ऑपोजिट दीवार पे होगा, तो वो इसमें नज़र नहीं आएगा रेंडर में। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एनिमेशन बना रहे हैं तो उसमें तो नज़र आएगा ना। तो उसमें आप ज़रा वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप सिंपली कमरे का नाम लिखें तो उस कमरे के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो um, ये तो नहीं था, नहीं। तो बेडरूम जो मैंने लिखा था उसमें नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली बेड लिखा ना, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया। तो इसको मैं क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास वो आ गई चीज़ जो भी ये थी। इसको ज़रा हम सेलेक्ट करते हैं, ये होम प्लान के अंदर ही आई है बिकॉज हमने वी फॉरगॉट टू क्लिक द कलेक्शन। और यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्केल डाउन, और मेक श्योर कि ये सेंटर में ही है, मतलब वो ज़मीन के साथ अलाइंड है। RZ और 90, ठीक है। 50, इसे हल्का सा मूव करें इस तरह से, और फिर इसे अपने हिसाब से स्केल कर दें। मेरे ख्याल में इतना ठीक रहेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा ये सीन बन गया। उसके अलावा बस पिक्चर्स ऐड करते हैं दीवार पे, और ये छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ये अलार्म क्लॉक है, और इस तरह से ना आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपकी अपनी चॉइस है। अभी हम पिक्चर्स ऐड करते हैं। क्या करेंगे, हम सिंपली सर्च करेंगे फ्रेम ब्लेंडर किट में, और हमें फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हीं में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि हम फ्रेम मतलब तस्वीर को इंपोर्ट करेंगे, और इसकी जो तस्वीर वाला जो टेक्सचर होगा ना, उसकी पेंटिंग वाला टेक्सचर होगा, उसको हम चेंज करके अपनी तस्वीर इसमें लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। लेट्स से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई फ्रेम इंपोर्ट करें, लेट्स से अगर हम ये वाला इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे ज़मीन पे आ गई है तस्वीरें। तो ये इसके सोफ़ा के अंदर हुआ है, तो हम कलेक्शन में बाहर इंपोर्ट करते हैं इसे। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जी शिफ्ट जी, पीछे ले जाएं थोड़ा सा, ज़रा टॉप व्यू में जाते हैं इसके लिए, यहाँ पे ले आते हैं इसे, और 90, ठीक है, और RY90, इस तरह से। ठीक है, और अब हम इसे ज़रा सा आगे ले आते हैं ताकि ताकि विजिबल हो हमारी इसमें सीन में। इसमें मैं टॉप व्यू में जाऊँगा,
और थोड़ा सा मैं इसे इंश्योर करूँगा कि बिल्कुल करीब ही हूँ, लाइक ज़्यादा ऐसे ना लगे कि बाहर निकली हुई तस्वीरें। तो इसको मैं क्या करूँगा, उसको जी ऊपर ले आऊँगा, थोड़ा सा स्केल अप करते हैं इस तरह से, हल्का सा नीचे, GX GY इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम लुक डेव मोड में जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिक्चर्स हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतनी सही से तस्वीरें नज़र नहीं आ रही। अगर हम रेंडर्ड मोड में जाते हैं फिर आप देख सकते हैं कि जो हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसका। अच्छा, तस्वीरें फिर भी नहीं नज़र आ रही फॉर सम रीज़न। तो इसको अगर हम इसको आगे ला के देखें, अच्छा इसके आगे, अच्छा मैं बताता हूँ क्या था। बेसिकली इसके आगे इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है। अगर हम जाते हैं साइकिल रेंडर में ना, तो फिर ये नज़र आनी चाहिए, बिकॉज अच्छा अभी तो लाइटिंग ही नहीं है हमारे पास कोई। इस क्यूब को डिलीट करते हैं, एच, अब आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है, बिकॉज उन्होंने ना ग्लास लगाया हुआ था उसके आगे। तो ग्लास जो है वो ईवी में बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता, तो उसके लिए ज़रा हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक और बैकअप सेव कर लेता हूँ, सेव बैकअप टू, ठीक है। तो अब हम अपने इसके अंदर जाते हैं और वापस हम टेक्सचर मोड में जाते हैं। अब हमने अगर इसकी जो है टेक्सचर चेंज करना है ना, पहले तो हम ये काम करते हैं कि हम जो ग्लास है ना इसका डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इससे ऐसा कोई फ़ायदा होता नहीं है, हमारी फिजूल में कन्फ्यूजन ही होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें उन्होंने टेक्सचर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप बाय द वे वंडर कर रहे हैं, इफ़ यू वंडरिंग कि जो मैं रीसेट करता हूँ पोजीशन, लेट्स से मैंने यहाँ पे मूव कर लिया, तो अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वहीं पे रह जाएगा, और अगर मैं राइट क्लिक करूँगा ना, राइट क्लिक, तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे रीसेट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, शेडिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे आके इसके अंदर जाते हैं, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे आके ना हम इसका टेक्सचर हमें चेंज करना है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेस कलर का टेक्सचर इंपोर्ट हुआ है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम अपना जो हमने ये ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग इंपोर्ट की थी, इसको ज़रा अंदर लाते हैं और इसको हटा के ना इसकी जगह ये डाल देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी वाली जो पेंटिंग है वो इसमें आ गई है। आप कंट्रोल टी दबा के, कंट्रोल टी अगर दबाएंगे तो आपके पास क्या पता ये कुछ ना हो, बिकॉज एक एड ऑन होता है नोड रैंगलर के नाम से। तो अगर आप एडिट प्रेफरेंसेस में जाएँ और आप एड ऑन्स में जाएँ, आपने इस बार इंस्टॉल नहीं करना, आपने सिर्फ सर्च करना है नोड, और फिर आ जाएगा नोड रैंगलर, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में आता है लेकिन ये इनेबल नहीं हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट ना, तो आप इसे सिंपली इनेबल करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा। आप कंट्रोल टी अगर आप दबाते हैं ना, तो ये मैपिंग वाले दो नोड्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बहुत सिंपल है। आपने इसका जो स्केल है, स्केल आप इसका कम कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं 0.8 करता हूँ तो आप देख सकते हैं बड़ा हो गया साइज़ में। ब्लेंडर में इस तरह काम करती हैं कि ऑपोजिट होता है चीज़ें, जितना आप स्केल को वैल्यू को नीचे करेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी होगी चीज़, जितनी कम करेंगे उतनी ज़्यादा वो होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप इसकी जो पोजीशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इतनी ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ से आ गई, मतलब 1 2 3 4 इसमें नज़र आ रही है ना, तो वो ये है कि वही आपका टेक्सचर ना डुप्लीकेट हुआ हुआ है 2 3 बार। अगर लाइक एक्स्ट्रा जगह रह जाती है तो फिर वही टेक्सचर आपका रिपीट होता जाता है। तो अभी मैं बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स थी उनको रहने दूँगा। ये दिस वाज आई थिंक 0 और दिस वाज 1, उसमें सही लग रहा था, तो एक में ये वाली रहने दूँगा। दूसरी इनफैक्ट मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो था ना, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस वाले में ना इसको पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ ये वाली जो पेंटिंग थी ना वो मुझे बुरी लग रही थी। तो अब ठीक है, अब इस तरह मैं इसको करना चाहूँगा। तो आप यहाँ तो ब्लेंडर किट वाली जो पेंटिंग्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं वही आप इंपोर्ट लाइक वही आप रख सकते हैं, या फिर आप अपनी पेंटिंग्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब पेंटिंग में इसमें अभी 2 ही लगाता हूँ, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिंपली आपने ब्लेंडर किट से इंपोर्ट करनी है और फिर आपने उन्हें लाइक वो टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने हैं अपने तस्वीरों के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा लाइटिंग। तो अब बेसिकली मैं अगर अपनी कैमरा में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मॉडलिंग है वो मेनली हो गई है। मतलब मॉडलिंग तो हमने नहीं की, जो मॉडल्स इंपोर्ट करने थे वो मेनली काम हो गए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ज़मीन पे, फ्लोर पे और जो वॉल्स पे टेक्सचर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि क्यूब सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी आई बिलीव सेलेक्टेड है। मटेरियल्स में जाते हैं, ऐड न्यू मटेरियल, ठीक है। इसको हम नाम रखते हैं फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। और अब हम क्या करेंगे, इसका बेस कलर जो है हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका बेस कलर जो है अभी फ़िलहाल तो वाइट ही रहने देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम इस पे ना पॉलीगॉन का जो वुडन टेक्सचर है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आप पॉलीगॉन पे जाएंगे और यहाँ पे आके आप वुडन फ्लोर जो है ये वाला टेक्सचर, ये आई बिलीव वाज दिस वन, ये वाला आप डाउनलोड करेंगे। रेजोल्यूशन जो है आप 2K या 3K कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे उसी तरह जिस तरह हम करते रहे हैं अभी तक। पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर में जाएँ, ब्राउज़, और जस्ट ब्राउज टू वेयर यू डाउनलोड दैट। और फिर हम क्या करेंगे कि हम एक सेकेंड,
वुडन फ्लोर, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के बाद लोड एंड अप्लाई मटेरियल। अभी आप देखेंगे कि सारी जो है हर जगह पे बेसिकली लग गया वुड मटेरियल, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ ज़मीन पे लगाना है ऑब्वियसली। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को यूवी अनरैप करते हैं ना, AU स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, और टिक कर दें इसे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है टेक्सचर की, वो बहुत ही लाइक परफेक्ट हुई है जिस तरह हम चाहते हैं। एक मसला है कि साइज़ बहुत बड़ा है टेक्सचर का, तो मेन स्केल जो है उसको हम ज़रा 10 अगर कर दें, 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 6 अगर हम कर दें दैट शुड बी फाइन। और इसको रोटेट भी करना है हमने, तो शेडिंग में जाके हम यहाँ पे आते हैं हम, और रोटेशन जो है इसकी हम सिंपली 90 कर देते हैं इसकी, तो 90 शुड बी फाइन। हाँ ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि दीवारों को सिलेक्ट करेंगे, फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। पीछे वाली भी कर सकते थे लेकिन आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है बिकॉज वो नज़र नहीं आ रही। तो और छत को भी सिलेक्ट करना है, प्लस दबाएंगे, न्यू मटेरियल, लेट्स नेम इट वॉल, ठीक है। असाइन कर दें इसको, ठीक है। असाइन करके हम करेंगे क्या कि हम बेसिकली इसमें थोड़ा सा ग्रे कलर का टेक्सचर हम इसमें लगा देते हैं, मटेरियल बेसिकली सिंपली, ठीक है। इस तरह हम लाइटिंग के बाद ओबियसली इसे एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारा ये बन गया। अब ज़रा हम एक काम करते हैं, ये जो कोनों पे ब्लॉक्स लगाए थे ना हमने, उनको ज़रा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सीन बन गया। अब ऑब्वियसली अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं कोई इसके साथ जिसमें आपकी सारी चारों दीवारें जो हैं वो विजिबल हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली इस दीवार पे भी लगाएंगे, लेकिन सिंस इट्स नॉट विजिबल तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा लगाने का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लाइटिंग करते हैं पहले, ठीक है। लाइटिंग के बाद हम टेक्सचर्स वगैरह जो है उनको मॉडिफाई ट्वीक कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम एक विंडो बनाएंगे, ठीक है। विंडो हम किस तरह बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। क्यूब को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके ना हमें एक विंडो बनानी होगी। हम सिंपली फेस सेलेक्ट मोड में जाके ये फेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वही जो हमने सिंपल तरीका सीखा था कि इंसर्ट करें आप, इंसर्ट इतना तकरीबन हम करते हैं, और SX हम करते हैं ज़रा इतनी सी हम फॉर एग्जाम्पल अगर विंडो बनाते हैं। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, ताकि हल्की सी विंडो वाली फील आए ना। तो करके और हम क्या करेंगे, E और S हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे। ये बहुत बिल्कुल ही ऑप्शनल स्टेप है, ये बस अंदर से थोड़ा बेहतर लुक देगा आपको, अदरवाइज़ इसका फ़ायदा सच नहीं है। तो प्लस में ये सेलेक्ट करके फेस डिलीट फेसेस, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर से ये जो है एक अगर अंदर से हम देखें तो ये देख सकते हैं बाहर से एक विंडो वाली लुक आ रही है बेसिकली। आप इसमें मटेरियल अपना जो टेक्सचर है वो आप लगा सकते थे इसमें विंडो का पूरा मॉडल बना के, लेकिन सिंस इट्स नॉट विजिबल तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा इसका सच है नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको लाइट करने के लिए ना दो तरीके हैं, या इधर आप HDRI यूज़ करें या फिर आप एक सिंपली एरिया लाइट यूज़ करें। अब HDRI वाला जो तरीका है ना उसमें थोड़ा आपका कंप्यूटर में परफॉर्मेंस जो है थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज HDRI में पूरा वो बैकग्राउंड उसने कैलकुलेट करना होता है। तो अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके साथ जाएँ, एक एरिया लाइट के साथ जाएँ, ठीक है सिंपली। और मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ और फिर देखेंगे जो बेहतर लगेगा मैं उसके साथ चला जाऊँगा, ठीक है। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों करके देखें, फिर जो बेहतर लगे आप उसके साथ उस तरीके के साथ जाएँ। यहाँ पे तकरीबन हम प्लेस करेंगे ऐसे, और इसको रोटेट करके हम ऐसे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। बेसिकली जैसे सनलाइट आ रही हो ना उस तरह से हमने करना है। अंदर जाते हैं और हम इसे रेंडर करके देखते हैं। अब हम रेंडर करने से पहले GPU कंप्यूट कर लेते हैं ताकि रेंडरिंग थोड़ी हमारी फास्ट हो, और जो है कंट्रोल भी करके रेंडर रीजन डिफाइन कर लेते हैं। अभी तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो इसकी पावर है उसको लेट से हम 1000 कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी भी काफ़ी डार्क है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी पावर जो है ज़रा हम 3000 करके देखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये वो है ना डे लाइट रेंडर है, तो डे लाइट में तो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। तो अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग दिस लॉट। लेकिन बात यह है कि हम जो कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, तो हम उसके लिए ज़रा कलर मैनेजमेंट में जाके हम कॉन्ट्रास्ट हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स बेटर आई थिंक। वापस आके देखते हैं, हाँ हाई कॉन्ट्रास्ट ठीक है, ठीक है। तो अभी एक मसला जो है हमारे पास वो है कि एरिया लाइट इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही फॉर सम रीज़न। तो इसको ज़रा मैं अभी हाइड करता हूँ, ठीक है। हाइड करने के बाद मैं पहले तो इसे निकाल लूँ ना यहाँ से, इसको इसमें भी कर लेता हूँ, ताकि इफ़ वी एंड अप यूजिंग एन HDRI और ये लाइट हम यूज़ नहीं कर रहे हो तो हम रेंडर में भी विजिबल ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक HDRI लगा देते हैं इसमें देखने के लिए कि कैसी लग रही है HDRI। एनवायरनमेंट टेक्सचर ओपन करते हैं और हम लेट्स से हम इसमें लगाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें लगाते हैं ये आउटडोर सन 1, ठीक है। इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 2-3 HDRI के साथ। लेकिन अभी अगर मैं इसमें जाऊँ ये जो सेटिंग्स है ना इसमें जाऊँ
और अगर मैं सीन लाइट्स और सीन वर्ल्ड को ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं हम लुक डेफ मोड में भी HDRI को देख सकते हैं। ठीक है, अब सीन ये है कि सन जो है ना, सन उस तरफ है आई थिंक। हाँ, सन जो है, सन उस तरफ है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सन है ना, ये आए हमारा इस तरफ से, ताकि लाइक यहाँ पे हमें लाइट आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना रोटेट कर सकते हैं HDRI को। और रोटेट किस तरह करते हैं, हम इसको, ये जो नीचे वाला पैनल है ना, इसको हम ज़रा ऊपर लाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम शेडर एडिटर में जाते हैं। अब ये शेडर एडिटर एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है जो हम शेडिंग में जाके, ये वाली जो जगह होती है ना, ये एग्जैक्टली वही होती है। ठीक है, ब्लेंडर में हर जो वो होता है ना, हर विंडो, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है, ये हमारी व्यू पोर्ट है, इसको चेंज करके मैं शेडर एडिटर बना दूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं वापस 3D व्यू पोर्ट में ले आऊँ तो अभी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पे सेट हुआ हुआ है। तो मैं से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो उसके नोड्स वगैरह जो मुझे नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको स्विच करके वर्ल्ड पे लाता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं हमारे पास HDRI का जो टेक्सचर है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बैकग्राउंड में कनेक्ट हुआ हुआ है और ये बैकग्राउंड हमारा वर्ल्ड आउटपुट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो इसमें अगर जाके हम Ctrl+T दबाएँ और वो जो हमारे मैपिंग नोड्स हैं वो आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम ज़रा ऐसे रखते हैं इसे, इसके पीछे देखते हैं। ठीक है, और जो इसका रोटेशन जी है उसको हम चेंज करते हैं, ऐसे लाते हैं ताकि जो सन है ना, सन आई बिलीव सन वहाँ पे, ठीक है, ऐसे लाते हैं। और इसे हल्का सा जो रोटेशन एक्स है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो सन है थोड़ा सा डायरेक्टली हमारी उस पर लगे। ठीक है, अब हम कैमरा पे वापस जाते हैं और हम इसको रेंडर करके देखते हैं। लेट्स होप इट लुक्स गुड। अभी जो काफ़ी डार्क है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स से हम 5 कर देते हैं। तो भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, आई एम लाइकिंग दैट अ लॉट। इसको ऑब्वियसली ट्वीक कर सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह का जो लुक है वो चाहिए। आई थिंक इस तरह का अच्छा लगेगा। इसमें क्या है कि बेसिकली जो विंडो है, विंडो से लाइट यहाँ पे आ रही है लेकिन वो वाला ऐसा डार्क भी है, तो ज़रा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रही है और थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो आई थिंक मैं गो विद दैट। हल्का सा हम इस तरह भी कर सकते हैं ताकि सन जो है डायरेक्टली लगे। इनफैक्ट वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें सन की जो ये शेडो आ रहा है ना, तो उससे ज़्यादा थोड़ा रियलिस्टिक फील आ रही है। तो हल्का सा अगर मैं इसे मॉडिफाई करूँ, बाय द वे प्रोजेक्ट को सेव कर लें बिकॉज अभी हम रेंडरिंग वाली कैटेगरी में, रेंडरिंग वाली टेरिटरी में, तो इसमें क्रैशेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ज़रूर प्रोजेक्ट को बार बार सेव करें और प्लस में बैकअप्स ही बनाते जाएं। मैं एक और बैकअप बना लेता हूँ, सेव कॉपी और बैकअप। ऑल्दो मेरे पास कंप्यूटर तो अच्छा है लेकिन फिर भी जो ब्लेंडर है ना वो कभी कभी क्रैश हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन रेंडर कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ना आप इसको मूव करके देखते हैं ना, जो आपको बेहतर लगे वो आप वही कर लें। आई थिंक ये ठीक है, आई थिंक इस तरह का कुछ ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रास्ट जो है, हाई कॉन्ट्रास्ट की जगह वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो फिर आई थिंक ये ज़्यादा थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक्चुअली नहीं, हाई कॉन्ट्रास्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। और ये इनफैक्ट इन माय ओपिनियन ये वाला जो हमने जो अभी बनाया ना, ये बेहतर लग रहा है इसके कंपैरेटिवली। तो की बनाया आउट, क्या पता मैं ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँ अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो मुझे तो। अच्छा, एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ना इसका जो टेक्सचर है वो अगर हम डार्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि डार्क ग्रे के साथ मैच करेगा ना। तो हम ज़रा ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे नोड्स हैं हमारे पास। अब नोड्स को जो मतलब पूरा जो उसको मैनेज करने का तरीका होता है ना, आपने हमने लेट से ये मॉडल डाउनलोड किया ना हमने, तो हमें पता नहीं है इस बंदे ने टेक्सचरिंग किस तरह की हुई है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने बैक ट्रैक करना है। ठीक है, बैक ट्रैक आपने इस तरह करना है, बेस कलर में जाएँ, देखें बेस कलर किस में लग रहा है। बेस कलर यहाँ पे लग रहा है, तो एम्बिएंट एक्लूजन नोड ये तो नहीं है, कलर का नोड तो नहीं है ना। तो अभी ये कलर नोड जो है ना, ये कलर रैम्प, इसको हम चेंज करेंगे तो आई थिंक हमारा कलर चेंज होना चाहिए इसका होपफुली। तो अगर हम इसे इस तरह करते हैं तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो वो है ना हल्की सी लाइनिंग जो, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा मेन टेक्सचर नहीं है उसका। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसका जो पेंट है, हाँ पेंट वाले को हम चेंज कर सकते हैं। तो पेंट जो है हम इसका अगर हम डार्कनेस थोड़ी कम कर दें, थोड़ी ज़्यादा कर दें आई मीन, तो फिर आई थिंक ठीक रहेगा। आई थिंक दैट्स फाइन। हल्का सा हम अगर से ऐसे करें, ये आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क हो गया और आई थिंक आई लाइक दैट कलर या। ठीक है, प्लस में सिमिलरली विद दिस इसको भी हम चेंज करते हैं। इसको ज़रा हम जो बेस कलर है उसको अच्छा अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेस कलर है ना उसमें कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। हम बाय डिफ़ॉल्ट ना ये एक टेक्सचर ही है ना सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट ए दबाएंगे और एक नोड होता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट। तो इसको अगर हम इसके बीच में लगा दें ना, तो हम बेसिकली इमेज की जो एडिटिंग है ना वो ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी ब्राइटनेस कम करें तो आप देख सकते हैं डार्क बनता जा रहा है। अगर इसकी कॉन्ट्रास्ट कम करें तो ये देख सकते हैं इस तरह का बनता जा रहा है।
और अभी एक सीन ये है कि मैंने इसे ग्रे बनाना है, ठीक है। ग्रे के लिए एक और नोड हम बना सकते हैं, शिफ्ट ए, हम लिखते हैं सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन वाला नोड होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी सैचुरेशन को। तो उसको अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो ये देख सकते हैं ग्रे बन गया। अब हम अगर इसे डार्क करें तो आई थिंक ये इतना आई फील लाइक ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, या क्या मे बी थोड़ा सा लाइक 0.25, या आई थिंक दैट्स परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको रेंडर होने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कोई एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, नोट्स अगर आपको थोड़े कन्फ्यूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार नोट्स इतने ज़्यादा हैं, सारे याद करने पड़ेंगे, तो अभी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जैसे आप करते रहेंगे ना ब्लेंडर यूज़, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो मसल मेमोरी है वो बनती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे नोट्स याद हो जाएंगे। शुरू में मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होता था नोट्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने यूज़ किया तो फिर नोट्स जो हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते गए। लेकिन एक चीज़ आपने बस ज़हन में रखनी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपने ज़रूरी करनी है। तो बस ये है कि आप ट्यूटोरियल्स पे रिलाय ना करें तो बेहतर है, ठीक है। आप ट्यूटोरियल्स बस एक बार देख लें ताकि आपको जनरल आइडिया मिल जाए कि यार हमने यूज़ लाइक सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करना है। और इस कोर्स के बाद आप डिफरेंट चीज़ों के ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं, लेकिन रिलाय मत कीजिएगा उन पे। आप खुद अपनी लाइक डिफरेंट चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपनी तरफ से चीज़ें बनाने पर आप फोकस रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स फाइन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसे हम रेंडर करते हैं। आप प्रोजेक्ट सेव करें, रेंडर प्रॉपर्टीज़ में नीचे जाएँ। मैक्स सैम्पल जो है इसके मैं तकरीबन 1000 रखूँगा, बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है जिस सीन में आपने HDRI यूज़ किया हुआ होता है, या फिर आपने लाइक बाहर से किसी इंडोर वाली जगह पे लाइटिंग आ रही होती है ना, तो वहाँ पे कोनों में ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो उसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप अपने सैम्पल जो है उनको हाई रखें, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर होने में, लेकिन आई मीन इसका हल यही है। इनफैक्ट मैं 1000 की जगह 1500 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसे रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज, और आई होप क्रैश ना हो जाए। अच्छा, एनीवेज, तो अभी रेंडर हो रहा है एंड आई सी यू व्हेन इट्स डन। ओके ओके, सो अभी हमारा जो रेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसकी थोड़ी हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर लेते हैं, जिसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो जो इमेज सेव एज, और आप इस पर कहीं पे भी सेव कर लें, तो इसे सेव कर लें। और अब हम आते हैं फ़ोटो एडिटर पे, जो वही हम ऑनलाइन वाले यूज़ कर रहे थे, उसी को हम यूज़ करेंगे, बिकॉज़ उससे लाइक आसान भी होता है, और प्लस में ये है कि सब लोग कर सकते हैं ना उसे। अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको इंपोर्ट करके ना हम इस पर थोड़ी एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट फ़िल्टर कलर। अच्छा, इसके अब सीन ये है कि वाइब्रेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जितनी आप ज़्यादा वाइब्रेंस रखते हैं ना, उतना मैंने नोटिस किया कि ज़्यादा आपका जो है रेंडर वो अनरियलिस्टिक लगता है। तो वाइब्रेंस को ज़्यादा मत कीजिएगा। सैचुरेशन का भी सेम सीन है। टेम्परेचर को हल्का सा मैं येलो वाली साइड पे लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज द थिंग इज़ कि सनलाइट आ रही है ना, तो सनलाइट थोड़ी सी येलो होती है, लेकिन जनरली जो टेम्परेचर कलर टेम्परेचर होता है वो आप अगर ज़ीरो पे रखते हैं ना, तो वो भी सही होता है। टिंट को हम नहीं छोड़ेंगे, ह्यू को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और लाइट में जो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करूँगा, बिकॉज जनरली जो ब्राइट रेंडर्स होते हैं ना थोड़े ज़्यादा, वो ज़्यादा अपील। फक। तू सुपने विच आ ही जांदी है, सही में मेरे ये हाय नहीं तेरा कोका 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 2.7 है। हाय नहीं का कोका 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 ले जो वे यहाँ गुजरात हिक्की लाख
भाई ब्लेंडर किट का है, ब्लेंडर किट। एक सेकेंड, एडिट। तू है कहाँ? है कहाँ? यारों के हैं।
यस हम ये यूज़ करेंगे, लेट्स गो।
सजन घर में चली, सजन घर में चली। भाई पॉडकास्ट लगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा इसको बनाते बनाते वरना। यो कटी दी कंडा से विच मार हुंदी आ मैंने। भाई ये एम्ब्रेस करे। हम सीखेंगे आर्ट ऑफ सिडक्शन। तगड़ा नहीं सिखा रहे भाई। आर्ट ऑफ shit, picking up women, picking art of picking up chicks. Hola amigo। नहीं ये सब कुछ नहीं है भाई। इश्कू रुक जाओ यार, रुक जाओ, कुछ तगड़ा दिखना है यार। क्या कहते हैं, जॉर्डन पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन कहता है, जॉर्डन पीटरसन ही है ना। जॉर्डन पीटरसन ब्रो दिस। There is evidence that more disagreeable people are more likely to be successful as managers. Now, why? Well, Boudreau, who wrote a paper called Effects of Personality on Executive Career Success, said the following: agreeableness associates with being trusting, submissive, and compliant, which could be perceived as naivete, docility, and a tendency to follow rather than lead. All right, so that's his opinion. But then, here's what he measured. So these are effects of big 5 traits on career success. Now, you know, career success can obviously be defined a number of ways. It could be career satisfaction, or it could be like external markers of career success, and they did both. So we're going to look at direct, because that's the external sort of objective markers. What you see is that if you're high in neuroticism, that's not so good for how much money you make. There's a negative correlation of 0.3, which, by the way, that's a big correlation. So, you know, you'll hear people say that 0.5 is a large correlation and 0.3 is moderate, and, you know, 0.2 is small, and that's wrong. And that was clarified 4 or 5 years ago. I'll get the paper for you. I can't remember it. It was an American psychologist. But the guy who wrote the paper, what he did was he looked at a whole bunch of social science studies and then calculated how frequently different effect sizes showed up. And what he found was that 0.5 was unbelievably large. You know, that 5% of social science studies ever got a correlation of 0.5. It's like, if you get a correlation of 0.5 in your study, you've either made a dramatic error, or you've replicated something that's already well known, or, you know, you're in science, because it never happens.
0.3, that's a pretty good correlation. So the fact that neuroticism is negatively correlated with how much money you make, how likely you are to ascend, and then how close you are to being CEO. Obviously the effect size decrease. So neuroticism is also, or sorry, extroversion is a reasonable predictor only of how much you're ascending, and it's pretty small. Openness has a correlation with how much money you make, but that's probably because openness is highly associated with intelligence, and so openness is not a good marker for intelligence. IQ tests are much better markers, so that's an attenuated relationship. But then you look at agreeableness. It's negative 0.32 in total, negative 0.24 for direct in terms of how much money you make. So, you know, that's an interesting thing, because one of the things that determines how much money you make is how willing you are to say no. Right? Because if you're negotiating with someone, then the only thing you have at your back is your ability to say no and to push it, or even to ask for a raise. And you know, pushy people are much more likely to ask for a raise, and of course those who ask for a raise are much more likely to get it. So the guys who are hard to get along with, because most of the people who are hard to get along with are guys, are more likely to be paid more. They're more likely to ascend the corporate ladder. They're more likely to be close to the CEO in terms of proximity. And they're even more likely to be rated as employable. It's funny, eh? Because you'd think that, you know, if you're agreeable and easy to get along with and all that, that people would be more likely to rate you as a suitable employee, but that isn't right. That's the opposite seems to happen. So disagreeable extroverts are narcissists, and there's some evidence that you can derive from this data, you know, because there's always this talk about disagreeable extroverts or narcissists being more likely to rise up to CEO level, and you know, there is some evidence for that, at least insofar as agreeableness is a negative predictor of doing such. Alright, so one of the things we've just found is that one of the predictors for ascendancy and proximity to a high status position is low agreeableness. Now, the next thing you might think about is, well, what role does that play in terms of the factors that men and women find attractive in each other? So you might say, well, what do you want in a mate? If you're a woman, you might say, well, you know, you want someone who's kind and loving and forgiving and empathic, and those are all good things, but it isn't necessarily the case that the empirical studies show that that's what drives mate selection. So we could look, this is an interesting study, so it's a few years old, 1,000 French-Canadian respondents, 433 males and 700 females, and so here are the variables. One is possession of resources. It's a composite index composed of occupational prestige, income, and education. And then the other variable is acquisition of partners, sexual partners, that is. Number of lifetime and preceding year sexual partners, lifetime occurrence of simultaneous partners, which is a yes or no variable, and lifetime frequency of simultaneous partners, 1 to 5, with 5 being very often. Here's the assumption. You can, you know, decide for yourself if you think this is a warranted assumption. The number of partners a member of sex A acquires is taken as an index of how often this individual is chosen by sex B. So that's an indication of reproductive fitness, desirability, at least as assessed by members of the opposite sex, who you would think would be the logical judges for that sort of thing. Male criteria. 166 unattached women ages 25 to 50. Correlation between fertility rates and number of partners in previous year equals 0.94. Males choose fertility. Indicators: beauty, waist to hip ratio, youthful appearance, and neotenous facial features. Neotenous means there's a tendency among animals as they evolve to increasingly look more in their adult stages like their juvenile forms. So here's an example. If you look at the skull of a baby chimpanzee, it looks almost exactly like the skull of an adult human. So what's happened is as adults, we're more like baby chimpanzees than the adult chimpanzees are. We've maintained a lot of our juvenile characteristics, playfulness, you know, the ability to continue to learn, plasticity, all those things. There's a preference in objective beauty
analysis, say, of facial features for men to prefer more neotenous female faces. So, and you can tell that if you look at pictures of models. They generally have relatively small noses, relatively big eyes, the sort of things that are associated with cute. And cute actually is a pretty identifiable category. Most of the things that people find cute have large eyes, and the rest of their facial features are relatively small. There's other things that are associated with cute that aren't necessarily associated with, sexual attractiveness, because cute things also have sort of random movements, like baby-like movements. And so the things that people, and relatively short arms, and just think of a teddy bear. So anyways, those are the male criteria. Agreeableness is one of the 5 dimensions of the big 5. We all know that, and it can be broken down into these 2 aspects, compassion and politeness. And so you can kind of figure out how agreeable you are by looking at these items. They're all positively scored for the sake of simplicity. So if you intensely feel others' emotions, if you're always inquiring about how others are doing, and you actually care, rather than doing it for the sake of show, if you're capable of sympathizing with other people, if you respect authority, if you don't like to seem or be pushy, and you don't like to impose your will on others, then you're an agreeable person. And a disagreeable person or an antagonistic person, obviously, is the opposite of that. So they don't feel people's emotions very profoundly. They're not really all that concerned automatically about how other people are feeling, and they're not that sympathetic. It's funny, because in my clinical practice, I can tell the difference between the agreeable people and the non-agreeable people, because when the agreeable people come and they have a cup of coffee, they always bring me one. But when the disagreeable people show up and have a cup of coffee, they only bring a cup of coffee for themselves. So it's quite comical, actually. So now you might think that, because what would you say? Our society is at the moment tilted towards regarding agreeableness as a virtue, because you should be kind and you should be empathetic and you should be compassionate and all those sorts of things. But our research, this isn't published yet because it's complicated to communicate, and we haven't figured out how to do it yet, but what we've found is that if you push any of the traits too far, they fall off a cliff fundamentally. So if you get too agreeable, then you're dependent and you can't make decisions and so on, and maybe you're kind of a Freudian Oedipal mother too, right? You're so concerned with your child's well-being that you're not harsh enough to send them outside or make them do anything they don't want to do because it might upset them. And so that's not so good. And then if you're too disagreeable, well, I already said what that was like. If you take antisocial people who are in prison, they're aggressive and violent, and the criminal types, and they're predatory, are low in agreeableness. So you can see how that's a bad thing. But then in the middle range, it gets more complicated, because then agreeableness, where you're located on the normal distribution, how good that is depends to some degree on what it is that you are going to do. So one of the ways to think about how to maximize your success in life is to attempt to match your personality to the environment. You might think that if how you raised your children mattered, then children who were raised well would be more similar than children who were raised badly, because that would reflect the effect of your parenting, right? So you've done a good job as a parent, so your children are more similar, whereas someone who just ignored them, those children are different. But that's actually the opposite of what happens, is that the children that are neglected are more similar, and the children who are attended to well are more different. And the reason for that, I think, is the same reason that we see more pronounced differences in egalitarian societies, which is, if you care for your children, it means that you make a very individual relationship with each of them. So you're not necessarily using the same strategies for each child, unless you think of them as meta strategies. And like a meta strategy might be, well, I get to know you and I get to know you, and because you're different people, I react differently to you. And what constitutes my philosophy of parenting would be act differently towards the children's differences. And so maybe if you're particularly good at that, your children turn out maximally different from one another, and that's because you're allowing their genetic differences to manifest themselves. You're not oppressing them, and trying to cram them into the little box that you think that they should fit in. Now, the downside of that is that you're going to get differences, and some of them might be quite surprising to you.
What emotion do you feel when you're going to approach someone you're very attracted to and there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear? Right, exactly, absolutely, because it's a real judgment, right? We're going to see a movie called Crumb where you'll see this in great detail, but it's a real judgment. It's like the best judgment is, well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Right, and that's sort of generally translated into, I think we should just be friends. Right, you know, and you can blow that off, and people do, and you have to, because it's part of being polite and civilized, but you know, let's make no mistake about it. There is no more fundamental judgment than that. So, paralysis. And there's no shortage of men, I mean, who are absolutely terrified of women. I mean, I've had many of them in my practice, you know. I had one guy, he was so terrified of women he couldn't even talk to them on the phone. It's more common than you think. So, but it's generally manifested by men who no one cares about, so it's generally irrelevant. So, well, it's the case. It really is the case. I'm not kidding. They're low status men. You know, they're people that are generally regarded as losers, and there isn't anybody who really gives a damn about what happens to them one way or another, and there's a lot more men in that category than there are women. Women are in all sorts of, you know, social categories that cause them misery and distress, but that one seems to be predominantly male. One of the things I'm going to do when we talk about Freud is I'm going to show you this movie Crumb, which I just told you about, and it's a very rare thing because it shows you the world from the perspective of very intelligent male losers, and that's just not a perspective you ever see, because it's the winners that tell the stories about their life. It's like, who the hell cares about the life of a loser? But this movie is about a loser who became a winner, and you know, almost as an act of revenge, and it's great, great examination of the Oedipal complex. Remarkable. Women select men. That makes them nature, because nature is what selects. And so, you know, you can think, well, it's only symbolic that women are nature. It's like, no, it's not just symbolic. It's not just symbolic. You know, and the woman, in some sense, is the gatekeeper to not in some sense, is the gatekeeper to reproductive success. And you can't get more like nature than that. In fact, it's the very definition of nature. So, as I said, there are lots of reasons why these symbolic representations are set up the way they are. Alright, so that's the great mother, nature. The queen, the matrix. The matrix is something from which all things form. Same root word as matter, mother, all the same root word. The matriarch, the container, the cornucopia, the object to be fertilized, the source of all things, the fecund, the pregnant. There are more parts of the association network. The strange, the emotional, the foreigner, the place of return and rest, the deep, the valley, the cleft, the cave, hell, death, and the grave, the moon, ruler of the night and the mysterious dark, and matter and the earth. So those aren't necessarily associated with femininity, but they're typically associated with femininity from a symbolic perspective. You know, so like generally, like a witch in a movie doesn't come riding out of the full bright sun at noon, right? That just doesn't happen because it doesn't make sense. It's a dark thing. And so if you saw that occurring in the light in a movie, you'd think, you know, what the hell's going on here? That doesn't make sense. And the reason it doesn't make sense is because it violates the complex, the symbolic complex. So those are female denizens of the underworld and hell. Very pleasant creatures. It's like Medusa with the head of snakes, you know. And if you ask, you know, why would a woman have a head of snakes in reference to a man? And that's really simple. I bet there are men here who know the answer to that. I don't know what you guys think about this, but I was pretty happy when I thought this up, and it took me a long time. So if you think about the world in Darwinian terms, right, it's a struggle for survival and reproduction, which are basically the same thing. Survival is you, but reproduction is the survival of your genes. So it's a survival issue over very long spans of time. Okay. What do we call the selection mechanism? Right, natural selection, right? It's nature who does the selection. Okay, so let me tell you something that makes female humans different than female chimps.
I mean, there's lots of things that do, but so, but here's an important one. If you look at which male in a chimp troop fathers most of the offspring, it's the dominant male. But the reason for that isn't because the female chimps sort of flock around the dominant male. Now that happens in other species, but it doesn't happen with chimps. What happens is the dominant male chases all the subordinate males away and will interfere with any sexual behavior they manifest. It'll chase them away. The females, though, are perfectly happy to mate with a subordinate male if they're in heat and they get the opportunity. So they go into heat, which is something that doesn't happen with female humans, and they really don't care who they mate with. Okay. Female humans are much different than that. They're picky. So they're choosy. It's a big deal. It's a big deal that they're choosy. Women also seem to evaluate men for their fitness. Now, so, lots of men have no sexual partners and they have no children. That's not the case with women. Almost all women have one child or more. And it's a rare woman indeed who cannot find a sexual partner. Some of you undoubtedly have already experienced what it's like to be possessed by a particularly stupid idea. You know, so maybe you've grown out of one or two of the stupid ideas that possessed you, or maybe you're possessed by an attraction to someone you can't control, or you can't control your eating behavior, or you're a pushover when it comes to interpersonal interactions because you're too agreeable, or you fly off the handle and fight, and none of this is really under your control. And so all of those things that manifest themselves not only in your behaviors but in your perceptions themselves, they tend to take on embodied form and use you as the vehicle for their activity. So, and when you're thinking about something like anger, for example, think about how it works, because it's quite peculiar. What must someone generally do? How must someone generally act if you're going to be angry at them? They have to be irritating, right? They have to provoke you in some way. Well, the mere fact that you perceive what they're doing as irritating or provoking doesn't ensure that anyone else would have thought about it as irritating or provoking, or that that's what they meant, or that that's what's happening. And my point is, it's very important to think about these complexes of ideas as subpersonalities, because otherwise you really don't get what they're like. If you're angry, if you have a proclivity towards anger, especially if it's an unthinking proclivity, anything that someone says might irritate you. And it isn't like they say something and you think about it and then you get irritated. It's like you perceive the person as irritating. Maybe it's just the way they hold their mouth or something. It can be very, very subtle. And you might say, well, it's not me, it's you. It's not that I'm irritated by you. It's that you're irritating. And that, that's a very difficult thing to settle, because the reality is somewhere between the subjective and the objective, right? A lot of arguments that you'll have with people throughout your life are about exactly that. Are you irritating or am I oversensitive? It's like, well, we're going to hash that out for a good long time before we figure it out. But the point is that if you're possessed by an emotional state or a motivational state or an idea or some kind of complex, you'll see the world through its eyes. And then the facts reveal themselves to you through the lens of that particular set of ideas. So it's a very frightening idea, because we like to think of ourselves as masters of our own house, which is completely clueless, because it's obvious if you watch yourself for like a month that you hardly ever do what you tell yourself to do, and you're liable to do all sorts of other things that you don't even want to do. Because you say, well, I'm going to go to the gym 3 times a week and I'm not going to drink, and maybe there's this person I'm not going to associate with, and then you don't go to the gym and you find that person and you go out and drink with them, and you think, what the hell's going on, but you're not the sort of person that will do what you say. And so, like, what sort of person are you? Well, that's a psychoanalytic question. It's a deep one, because you're a peculiar thing, and there's parts of you that are really, really, really old, and the sort of naive you, the naive young you that you think of yourself as is like a little piece of flotsam in an ocean of complexity, and the ocean of complexity is you. And part of diving down into the depths is to start to understand what it means to be human, and like whatever that means, it's the one thing you can say about it for sure is that it's bloody peculiar. Men use the image of female perfection to motivate themselves,
And that's exactly right. That's precisely what they do. You see that in the Tom Sawyer story. So Tom Sawyer is about 12 years old, and he's still hanging around with his friends like Huck Finn. And this girl moves across the street, Becky, and she comes out, and he's struck by her for the first time in his life. Something's changed. And the first thing he does is hop up on a picket fence and show off and balance in front of her. And he's saying, well, look at me, look at me. He's like the male bowerbird building something beautiful so the female will approve of it. And it's motivation. You know, and that's something that I think modern women don't really understand about men. They don't understand that, at least to the degree that males are uncorrupted and not bitter because of being rejected, they're doing everything they can to kneel before the eternal image of the feminine and try to make themselves worthy. That's the chivalry story, right? That's what you should encourage in your partner. So out of chaos emerges this first form. It's the feminine form. It's partly the form that represents novelty as such. So, and on one hand it's promise, on the other hand it's threat. That you wouldn't believe, and I don't know, because I don't understand the situation with women as well as I understand the situation with men, obviously, being a man. But I don't know if women have any idea how paralyzing they are to especially young men. A very large number of my clinical clients, but also young men I've talked to in general, are absolutely terrified of women because they're terrified of being rejected. And the terror exists in precise proportion to the attraction to the woman, which is a horrible paradoxical situation to be in. It's often why men make such fools of themselves in front of women that they're attracted to. It's because, first of all, they don't see the woman that they're attracted to, because what the hell do they know about her? They don't see her as an individual. They see her as the manifestation of a judgmental ideal. And then it's only in establishing the relationship with the actual woman that they can start differentiating between the judgmental ideal and the actual individual woman. And that also requires a sacrifice. And the sacrifice is, you never can have an ideal woman. So to have a relationship with any woman, you have to sacrifice the relationship with the ideal woman, and you have to see the individual woman and separate her from the ideal. And that's the same thing that happens to the hero in Sleeping Beauty, right? He sees the evil queen who actually turns into the dragon of chaos. And it's not until he can defeat her that he can establish a relationship with the actual princess. And that's exactly the case. I had one of my clients who ran this men's group, which was quite interesting. One of the things they had the initiates do, which was very intelligent, was to go out and ask 50 women in one day for their phone numbers. Why? Politely, properly, you know. It was a game, but it wasn't a stupid game. And the idea was, get over your fear of rejection. And how do you do that? By encountering it continually and continually and continually, so that you're no longer paralyzed by this. The degree to which the terrible part of the world manifests itself in your life is proportionate to how insufficient you are. And we don't know the full extent of that. If you got your act together completely, maybe all the suffering will disappear from your life. Or at least maybe all the unbearable suffering. And maybe all the suffering or the unbearable suffering from the lives of people around you too. And you already know that because there are people that you'll go to in a crisis that you can rely on, and you know they'll help you. And you wonder what the world would be like if you were like that and everyone else was like that too. We'd have a lot fewer crises. And the ones that we do have would be a lot more manageable. And so when people say, well, why is the world so rife with suffering? One answer to that is because we're not yet what we could be. And at least that's an answer that we have some control over, right? You're not going to negotiate directly with Mother Nature, but you might be able to put yourself together a little bit and see if that works. At least it's under your control. Well, here's the decomposition of the fundamental archetype. The dragon of chaos differentiates, on the one hand, into the feminine. That's the unknown. And the feminine differentiates further into the negative feminine and the positive feminine. The negative feminine is the reason for witch hunts. It's the reason for, you know, there's a whole group online called Men Going Their Own Way, MGTOW.
It's a very interesting group अब to देख go सकते हैं ऑब्जेक्ट study. सेट हुआ हुआ There's है lots मैं of जब them. भी I don't know ऑब्जेक्ट how सेलेक्ट many करूँगा of तो उसके them नोट्स there वगैरह are, जो and मुझे नज़र आ most रहे of हैं them are older. लेकिन अगर Many मैं of them इसको are सिर्फ men एक who've been वर्ड through पे a लाता हूँ ना particularly तो आप देख सकते horrifying हैं हमारे divorce पास for एच one टी आर reason आई or का another, जो and टेक्स्ट है they're वो आ गया हमारे पास ठीक है ये बैकग्राउंड में कनेक्ट हुआ हुआ है और ये बैकग्राउंड हमारा वर्ल्ड आउटपुट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है चलाते हैं ताकि जो सन है ना रोटेशन अभी जो काफ़ी आई थिंक हमें अगर में से मॉडिफाई काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन रेंडर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ना तो आई थिंक दैट्स को मैनेज करने के लिए इस तरह करना है बेस कलर में जाएं देखें बेस कलर किस में लग रहा है बेस कलर यहाँ पे लग रहा है तो एम्बिएंट एक्लूजन नोड ये तो नहीं है कलर का नोड तो नहीं है ना तो अभी ये कलर नोड जो है ना ये कलर रैम्प इसको हम चेंज करेंगे तो आई थिंक हमारा कलर चेंज होना चाहिए इसका होपफुली तो अगर हम इसे इस तरह करते हैं तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो वो है ना हल्की सी लाइनिंग जो उसका कलर चेंज हो रहा है तो ये बेसिकली हमारा मेन टेक्सचर नहीं है उसका तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसका जो पेंट है हाँ पेंट वाले को हम चेंज
Welcome to another Blender tutorial. In this video, preferences for no is another material. Don't see press the plus icon to pull the yes layer and press Ctrl Shift T at the same time. ये क्यों बंद हो गया भाई है सिस्टम सेव एंड लोड very nice wooden floor 4K it look nice bro
वहाँ की चूत
पेंट जो है हम इसका अगर हम डार्कनेस थोड़ी कम कर दें, थोड़ी ज़्यादा कर दें आई मीन, तो फिर आई थिंक ठीक रहेगा। आई थिंक दैट लाइक यहाँ पे हमें लाइट आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना रोटेट कर सकते हैं HDRI को। और रोटेट किस तरह करते हैं, हम इसको ये जो नीचे वाला पैनल है ना, इसको हम ज़रा ऊपर लाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम शेडर एडिटर में जाते हैं। अब ये शेडर एडिटर एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है जो हम शेडिंग में जाके ये वाली जो जगह होती है ना, ये एग्जैक्टली वही होती है, ठीक है। ब्लेंडर में हर जो वो होता है ना हर विंडो उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ये हमारी व्यू पोर्ट है, इसको चेंज करके मैं शेडर एडिटर बना दूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अगर दबाएं और वो जो हमारे मैपिंग नोड्स हैं वो आ जाएंगे। वो होता है ना ताकि ये वाली जो जगह होती है ना, ये एग्जैक्टली वही होती है, ठीक है। ब्लेंडर में हर जो वो होता है ना हर विंडो उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ये हमारी व्यू पोर्ट है, इसको चेंज करके मैं शेडर एडिटर बना दूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं वापस 3D व्यू पोर्ट में ले आऊँ तो अभी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पे सेट हुआ हुआ है। तो मैं से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो उसके नोड्स वगैरह जो मुझे नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको स्विच करके वर्ल्ड पे लाता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं हमारे पास HDRI का जो टेक्सचर है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। ये बैकग्राउंड में कनेक्ट हुआ हुआ है और ये बैकग्राउंड हमारा वर्ल्ड आउटपुट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो इसमें अगर जाके हम Ctrl+T दबाएं और वो जो ठीक है, वर्ल्ड पे कलेक्ट कर दबाया टी। अरे यार एक प्रेफरेंसेस, क्या नाम है उसका, नोड रेंगलर, नोड नोड रेंगलर बंद क्यों हो जाता है?
जो हमारे मैपिंग नोड्स हैं वो आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आई बिलीव सन वहाँ पे, लेट्स होप इट लुक्स गुड। अभी जो काफ़ी डार्क है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसकी जो स्ट्रेंथ, ठीक है, तो बेसिकली जो विंडो है, विंडो से जो आपको बेहतर लगे वो आप वही कर लें। और ये इनफैक्ट इन माय ओपिनियन ये इसको मैनेज करने का तरीका होता है ना, आपने हमने लेट्स से ये मॉडल डाउनलोड किया ना हमने, तो हमें पता नहीं है इस बंदे ने टेक्सचरिंग किस तरह की हुई है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने बैक ट्रैक करना है, ठीक है, बैक ट्रैक आपने इस तरह करना है, बेस कलर में जाएं, देखें बेस कलर किस में लग रहा है, बेस कलर यहाँ पे लग रहा है, तो एम्बिएंट एक्लूजन नोड ये तो नहीं है, कलर का नोड तो नहीं है ना, तो अभी ये कलर नोड जो है ना, ये कलर रैम्प, इसको हम चेंज करेंगे, तो आई थिंक हमारा कलर चेंज होना चाहिए इसका होपफुली। अगर मैं से तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो वो है ना हल्की सी लाइनिंग जो उसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारा मेन टेक्सचर नहीं है उसका। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसका जो पेंट है, हाँ पेंट वाले को हम चेंज कर, तो पेंट जो है हम इसका अगर हम डार्कनेस थोड़ी कम कर दें, थोड़ी ज़्यादा कर दें आई मीन, तो फिर आई थिंक ठीक रहेगा। आई थिंक दैट्स फाइन। हल्का सा हम घर से ऐसे करें, फिर आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क हो गया, और आई थिंक आई लाइक दैट कलर या ठीक है। प्लस में सिमिलरली विद दिस इसको भी हम चेंज करते हैं, इसको ज़रा हम जो बेस कलर है उसको ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेस कलर है ना उसमें कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते, हम बाय डिफ़ॉल्ट ना ये एक टेक्सचर ही है ना सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट ए दबाएंगे और एक नोड होता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट, तो इसको अगर हम इसके बीच में लगा देना, तो हम बेसिकली इमेज की जो एडिटिंग है ना वो ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी ब्राइटनेस कम करें और देख सकते हैं डार्क बनता जा रहा है, अगर इसकी कॉन्ट्रास्ट कम करें तो ये देख सकते हैं इस तरह का बनता जा रहा है। और अभी एक सीन ये है कि मैंने इसे ग्रे बनाना है, ठीक है, ग्रे के लिए एक और नोड हम बना सकते हैं, शिफ्ट ए, हम लिखते हैं सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन वाला नोड होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी सैचुरेशन को, तो इसको अगर हम देंगे तो ये देख सकते हैं ग्रे बन गया। अब हम अगर इसे डार्क करें तो आई थिंक ये इतना फील लाइक ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, या क्या मे बी थोड़ा सा लाइक 0.25, या आई थिंक दैट्स परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको रेंडर होने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कोई एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा नोट्स अगर आपको थोड़े कंफ्यूज कर रहे हो, आपको लग रहा हो क्या नोट्स इतने ज़्यादा हैं सारे याद करेंगे, तो अभी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जैसे आप करते रहेंगे ना ब्लेंडर यूज़, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो मसल मेमोरी है वो बनती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे नोट्स याद हो जाएंगे। शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था नोट्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने यूज़ किया तो फिर नोट्स जो हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते गए। लेकिन एक चीज़ आपने बस जहन में रखनी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है, प्रैक्टिस आपने ज़रूरी करनी है। तो बस ये है कि आप ट्यूटोरियल्स पे रिलाय ना करें तो बेहतर है, ठीक है, आप ट्यूटोरियल्स बस एक बार देख लें ताकि आपको जनरल आइडिया मिल जाए कि यार हमने यूज़ लाइक सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करना है, और इस कोर्स के बाद आप डिफरेंट चीज़ों के ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं, लेकिन रिलाय मत कीजिएगा उन पे, आप खुद अपनी लाइक डिफरेंट चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपनी तरफ से चीज़ें बनाने पे आप फोकस रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स फाइन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसे हम रेंडर करते हैं। आप प्रोजेक्ट सेव करें, रेंडर प्रॉपर्टीज़ में नीचे जाएँ, मैक्स सैम्पल जो है इसके मैं तकरीबन 1000 रखूँगा, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जिसमें आप जिस सीन में आपने HDRI यूज़ किया हुआ होता है, हर जगह पे लाइटिंग आ रही होती है ना, तो वहाँ पे कोनों में ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप अपने सैम्पल जो है उनको हाई रखें, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा रेंडर होने में, लेकिन आई मीन इसका हल यही है। इनफैक्ट मैं 1000 की जगह 1500 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसे रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज, और आई होप क्रैश ना हो जाए। अच्छा एनीवेज, तो अभी रेंडर हो रहा है एंड आई सी व्हेन इट्स डन, ओके। ओके सो अभी हमारा जो रेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसकी थोड़ी हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर लेते हैं, जिसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो जो इमेज सेव एज, और आप इस पर कहीं पे भी सेव कर लें, तो इसे सेव कर लें, और अब हम आते हैं फ़ोटो एडिटर पे, जो वही हम ऑनलाइन वाले यूज़ कर रहे थे उसी को हम यूज़ करेंगे, बिकॉज उससे लाइक आसान भी होता है, और प्लस में ये है कि सब लोग कर सकते हैं ना उसे, अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप तो किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। ओके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको इंपोर्ट करके ना हम इस पर थोड़ी एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट फ़िल्टर कलर। अच्छा इसके अब सीन ये है कि वाइब्रेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जितनी आप ज़्यादा वाइब्रेंस रखते हैं ना, उतना मैंने नोटिस किया कि ज़्यादा आपका जो है रेंडर वो अनरियलिस्टिक लगता है, तो वाइब्रेंस को ज़्यादा मत कीजिएगा। सैचुरेशन का भी सेम सीन है, टेम्परेचर को हल्का सा मैं येलो वाली साइड पे लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज द थिंग इज़ कि सनलाइट आ रही है ना, तो सनलाइट थोड़ी सी येलो होती है, लेकिन जनरली जो टेम्परेचर और कलर टेम्परेचर होता है वो आप अगर 0 पे रखते हैं ना तो वो भी सही होता है। टिंट को हम नहीं चढ़ेंगे, ह्यू को भी हम नहीं चढ़ेंगे, और लाइट में जो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करूँगा, बिकॉज जनरली जो ब्राइट रेंडर्स होते हैं ना थोड़े ज़्यादा, वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं और लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं वो।
और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी। हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा अगर नीचे ले आऊँ इस तरह से, और आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। क्लैरिटी को मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं क्लैरिटी को थोड़ा सा लाइक नीचे ले जा सकता हूँ, हल्का सा उससे हल्की सी ब्लरीनेस आएगी जिससे थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़्यादा रेंडर पॉसिबली लग सकता है। प्लस मैं ग्रेन थोड़ा सा ऐड करूँगा। अगेन बात ये है कि आप जो भी चीज़ ऐड करें उसको थोड़ा सा एतदाल में ऐड करें, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो फिर वो बुरी लगती है चीज़। तो आई थिंक दैट्स फाइन। सीन में जाके हम विनियट थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ग्लैमर ये फॉर सम रीज़न लाइक आई डोंट थिंक इसमें इतना ज़्यादा काम की चीज़ है। अच्छा, ब्लूम आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हल्का सा मैं बिल्कुल ऐड करूँगा, लाइक 1 या 2। थोड़ा सा इससे रियलिस्टिक फील आ रही है रेंडर में, लेकिन ज़्यादा इसका कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं। टोनिंग में जाएंगे, टोनिंग लाइक आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़रूरत है हमें अप्लाई। और कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई चीज़ हमें ज़रूरत तो नहीं है इसमें से, नहीं परफेक्ट है। ठीक है, तो बस इसे सेव कर लेते हैं, और जो क्वालिटी है उसको हम 100% कर लेते हैं, और सेव एज ई। सेव हो गया, और या दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडे गाइस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, सो आज हम सीखेंगे कि एक ऐड ऑन है ब्लेंडर किट के नाम से ना, उससे उसको यूज़ करते हुए हम मॉडल्स किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर में। अब ऑब्वियसली सारे जो मॉडल्स होते हैं हम खुद तो नहीं बनाते। हम फॉर एग्जांपल अगर सर्च करें 3D मॉडल, लेट्स से कार, 3D, ठीक है, 3D मॉडल ऑफ अ कार, आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, डोंट टेल मी मैंने स्किप और मार ब्लेंडर दिया को आप है। डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स अगर हम ये गाड़ी डाउनलोड करते हैं तो फिर इसको हम टेक्सचर कर सकते हैं, लाइटिंग खुद इसकी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ना, तो मैं आपको ज़रा इंपोर्ट करना सिखाता हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से, मैं रिकमेंड करूँगा आपको आज या तो आप फ्री 3D से करें, या तो स्केच फैब से करें, CG ट्रेडर से करें, या फिर टर्बो स्क्विड से करें। ये 4 फेमस वेबसाइट हैं। उसके अलावा ये हम 3D डाउनलोड, फ्री 3D, ये मतलब मैंने खुद ट्राई नहीं किया है। आर्काइव 3D सही होती है, आर्काइव 3D.net, इसे मैंने एक बार किया था डाउनलोड। लेकिन कहने का मकसद है कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं, इनसे आप फ्री मॉडल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप पेड मॉडल जो हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो पेड मॉडल्स होती हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और आजकल यूजली मॉडलिंग हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा लाइक खुद से मॉडलिंग नहीं कर रहा होता चीज़ों की ना। गाड़ियों की यूजली हम गाड़ियों के और लाइक किसी भी चीज़ के हम मॉडल उठा रहे होते हैं इधर उधर से। और प्लस में या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लेंडर में एक आसान तरीका ये है, पहले जब मैं सिनेमा 4D यूज़ करता था तो उसमें सिर्फ यही तरीका होता था कि आप ऐसे ही डाउनलोड करो। लेकिन यूजली आजकल लोग इस तरह नहीं करते। ब्लेंडर किट में एक ऐड ऑन होता है ब्लेंडर किट के नाम से, सॉरी ब्लेंडर में एक ऐड ऑन होता है ब्लेंडर किट के नाम से। अगर आप सर्च करते हैं ब्लेंडर किट तो आपकी पहली वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वेबसाइट खुलाई है, आप डाउनलोड ब्लेंडर किट को दबाएं, और ये ब्लेंडर किट ऐड ऑन है। इससे आप बेसिकली कोई भी मॉडल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इनकी बड़ी कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको पूरा मेथड भी दिखा रहे हैं इंस्टॉल करने का, लेकिन मैं आपको ज़रा वॉक थ्रू दे देता हूँ। पहले तो आप डाउनलोड करें, ठीक है, और ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ब्लेंडर आप ओपन करें, ब्लेंडर का नया प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, और प्रोजेक्ट को सेव कर लें। अब क्या करें, एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस, एड ऑन, जिस तरह हमने पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर डाउनलोड किया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह डाउनलोड करना है हमने, इंस्टॉल करना है। कि इंस्टॉल को दबाएं, और अब जाएं आप डाउनलोड्स में, या जहाँ भी आपने सेव किया है ब्लेंडर किट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लिक करके आपने इंस्टॉल एड ऑन को दबाना है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसलिए मैं नहीं दबा रहा। और फिर यहाँ पे आपका बाई डिफ़ॉल्ट ना, तो इसे आप टिक करें, और फिर ये वो हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड भी हो गया है। अच्छा, ये मॉडल भी डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको ये भी पहले इंपोर्ट करना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्लेंडर किट सिखाऊंगा इंपोर्ट करना। तो जब भी मॉडल डाउनलोड हो जाए तो आप इसे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा। ये ऑब्वियसली हर मॉडल के हिसाब से डिफरेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको 3 फाइल्स मिल रहे हैं। आपको डॉट ब्लेंड फाइल मिल रहा है जो आप डायरेक्टली ब्लेंडर में खोल सकते हैं।
आपको .obj मिल रहा है और .mtl मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या। अगर आपके पास ब्लेंडर है, अगर आपने ब्लेंडर में यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप .blend यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर मॉडल के साथ ब्लेंड फाइल नहीं आता, सिर्फ आता है। और यूजली आप OBJ आपको मिल रहा होगा, ठीक है। MTL की आपने परवाह नहीं करनी, इसमें टेक्सचर्स होते हैं, लेकिन टेक्सचर यूजली हम यूज़ नहीं करते हैं इनके, हम खुद सेपरेट टेक्सचर्स बनाते हैं। OBJ को आप ड्रैग करें कहीं पे भी, मैं अभी डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। और फिर अगर आपसे डायरेक्टली ड्रैग इन करेंगे ना तो होगा नहीं इस तरह से। आपने करना ये होगा कि आपने फाइल में जाना है, इंपोर्ट, और फिर आपने या तो FBX करें अगर आपके पास FBX फॉर्मेट है, हमारे पास है OBJ फॉर्मेट, तो हम वेव फ्रंट में जाएंगे .obj, ठीक है। यहाँ पे आप जाके डेस्कटॉप में जाएँ, bugatti.obj, अभी इंपोर्ट हो रहा है, इसे ज़रा इंपोर्ट होने दे, थोड़ी क्या पता देर ले, कुछ सेकंड्स लेगा लेकिन हो जाएगा होपफुली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं गाइस मैं और आऊँगा जाके इसमें वापस लाइट्स वगैरह भी ऑलरेडी अवेलेबल बस हैं, एक दिखाने के लिए कि हमने क्या बनाया आज।